And we are willingly against the principle of religion that thou shalt not kill. We have opened so many thousands of slaughterhouses, giving a nonsense theory that the animal has no soul. Just see the fun. And this is going on. And we want to be peace. Therefore, your Senate House has issued some injunction order that on the 30th of April 1974, there will be mass prayer. We'll explain it. Let's explain it. What is that? Well, when he said in a resolution on April 30th there be a national observance of prayer because of the state of the nation's moral decay. So you might have seen that. It is good that at least the managers of the state, they are coming to their sense. But this sentiment will not help. One must be serious. The sinful activities, as we have forwarded our manifesto, that no illicit sex, no meat eating, no intoxication, no gambling. But I think they will not agree to this fate. And what prayer will do? No. God is not so foolish that you go on doing all nonsense and simply by prayer you become out of it, punishment. No. That is not possible. Therefore I am speaking of the Viduras. So that saintly person accepted to be punished by Jamaraj, but he also cursed him that because in my innocence I committed some sin, you are punishing me in this way. So I also curse you that next life you will have to become a Shudra because you have no intelligence of a Brahmana or Kshatriya. So Vidura became a Shudra. Shudra means he was born by a king, he was begotten by a king, but his mother was Shudra, maidservant. That was the system that when a king is married, the father of the princess also gives so many girls to go with the princess as maidservant. And sometimes the maidservants also give birth. They are called Dashi Putra. Such son could not claim to the throne, but were provided Dashi Putra. So Vidu's history is like that. He was a Dashi Putra, brother, step-brother, not exactly step-brother, but brother of Maharaj, Dhritarashtra. But he was a very saintly person, because formerly in a previous life he was Jamaraj, so he was not ordinary man. So he cultivated spiritual consciousness. Now, after leaving this body, he returned again, Pithivi Sakhayam Jajo. He again returned to his original post. Temporary, he got the life of a Shudra. Again he returned back by his pious activities. Similarly, there are many narrations in the Puranas. Sometimes Indra, the king of heaven, he was also cursed by Brihaspati to become a hog in the
in this planet. So there are many incidences by cursing, by accident, even by accident. You have to accept a body which you do not desire. That is just like Bharat Maharaj. Bharat Maharaj, he was the king of this planet, and at the age of 24 years, very young age, young wife, young children, kingdom of the whole planet, he left everything. He went to the forest for cultivating spiritual advancement. But one day he saw that a deer was drinking water in front. In the meantime, there was a roaring of a lion. And the deer was pregnant. She gave birth to a cub and separated her. So Bharat Maharaj saw the little cub is dying. He picked up and kept, and it became to growing. So he has some little affection, just like we have got affection for cubs of dog and others. So one day that little cub did not return in the evening, and he went to search out on the hill and accidentally fell down, and next life he became a deer. Yes. This is the science. Jam jam bhapi smarana bhavam tajattanti kalivaram. The Bhagavad Gita I find. At the time of death, as you are thinking, you will be carried to such body. This is the example. Just like this, Bharat Maharaj, such an exalted person, he had to become a deer. But because he was very spiritually advanced, although he became a deer, he was living with the saintly persons. When saintly persons were sitting, he was sitting down there. He was eating the flowers and leaves which the saintly person left after worship. In this way, he had to wait for one life, and the next life, he became a son of a nice Brahmana. So, because he was remembering this different birth, he became very grave and silent. He was not talking with anyone. So, it is very dangerous to contaminate. So, he was known as Jad Bharat. This story you will find in the Srimad Bhagavatam. So, just try to understand that death is there. You have to die. You may declare yourself, I am very independent, I don't care for God or anyone, but God will not excuse you. You have to die. You will see God in the form of death, just like Hiranyakashipu is saying. Prahlad says, my dear father, why don't you accept God? Where is God? I don't care for your God. You rascal boy, you're chanting Hare Krishna. So God, the atheist may declare like that there is no God, but he'll see God at death. And that is compulsory. There is no excuse. So, at the time of death, the mentality which you have created by practice, sadarthadabhava bhavita, will act. This Hare Krishna movement, this Krishna consciousness movement, is simply educating people so that at the time of death one can remember Krishna. That's all. This simple. And if he is fortunate enough to do this, immediately he is transferred to the Krishna Loka. Immediately. Within a second. That is stated in the Bhagavad Gita. Tafta deham punarjanmanaiti mameti kaunteya.
So, why we should waste our time thinking so many nonsense things? Why not think of Krishna, how beautiful he is standing here at Radharani? And we come here and take the impression and simply think of him, our life is perfect. This is Krishna consciousness. What is the difficulty and what is your loss? If you gain such big profit simply by thinking of Krishna, why should you lose this opportunity, this human form of life? A cat cannot be educated, a dog cannot be educated. If I teach a dog, my dear dog, please think of Krishna, he is unable. It is not possible. But a human being, although at the present moment he is like a dog, but he can be trained to become a human being and think of Krishna. That is possible. So we should take the opportunity. Bhaunam janmanamante. This life is gotten after many, many births. We do not know, we have forgotten. This is the opportunity. And here is the proof, Shastra, that Krishna Veshena Chitta. How Jamaraj Vidu returned to his place, that Krishna Veshena Chitta. He was fully absorbed in Krishna thought. Not only Krishna, you can go to Krishna Loka or any Loka you desire. The yogis, they also can do that. Yoga practice. But that is not possible in this age. The so-called yoga practice going on simply bluff. Real yoga practice means one becomes so perfect that he will not die natural death. He will die when he likes. He will not be forced to die. When he thinks, now I am fully prepared, now I shall leave this planet, I shall go to such and such planet, such and such loka, he immediately transferred. That is yoga practice. So, that practice is not possible. Therefore, still in India, you'll find many yogis are there. They come to Kumbh Mela that will be held in the month of February from distant places, and you see just like young men, but some of them are 300 years old, 400 years old. Still, how? And they are preparing themselves. They think, a yogi thinks that now I am not prepared. There may be mistake. I am not prepared to enter such and such planet. So that concession is given there by the yogic practice. Just like you appear for an examination, unless you are fully prepared, you are certain that I must pass, you do not appear. Similarly, the yogis, unless one thinks that I am now fully competent to enter such and such planet, he does not give up this body. But that practice may be successful for 1 or 2%. Generally, it is not successful. But this Krishna consciousness, Bhakta Yoga system, is so easy and perfect that if you simply think of Krishna, and if you become perfect to think of Krishna at the time of death, then immediately you are transferred to the Krishna Loka, or any Loka you like. Not only Krishna Loka, any Loka. If you desire to go to heavenly planet, to Brahma planet, to Saptaloka, Mahaloka, Janaloka, many thousands and millions of planets are there.
Or even if you want to go beyond this material world to the Vaikuntha planet, Krishna planet, Goloka planet, you can go there. This is, that is stated in the Bhagavad Gita. Janti deva brata devan pitri janti pitri brata. People, just like, they're very much anxious to go to the moon planet. But what is this nonsense moon planet? It is also a material planet. Actually, if you go moon planet, you can live for 10,000 of years. That is the statement in this verse. But after 10,000 thousands of years, you have to die. So if you go to any planet within this material world, the four material problems, namely birth, death, old age and disease will follow you. You may live in one planet, just because we are allowed to live on this planet at most 100 years, not more than that. Or the ant is allowed to live for 6 hours, or another flies one moment. There are different varieties of. A Brahma is allowed to live for millions of years. So according to the different types of body, we are allowed to live under certain duration of life. But nobody can be immortal here. That is not possible. That is possible when you transfer yourself to the spiritual world. Vaikuntha Loka. Jadgatyana nivattante tadhama paramam. That is possible. So, this Krishna consciousness movement is teaching, educating people in such a way that not only he goes to the spiritual world, but he goes to the highest planet of the spiritual world, Goloka Vrindavan, where Krishna is there. Where Krishna is there. So, Digiropi Paritajya Pravasi Deham Atmana. Deham. Paritajya Deham. So we give up this body. I am not lost. I am transferred to another body. We give up this body. Just like I give up one kind of dress, I take another kind of dress. Bhasansi Jidlani Katha Vihaya. These are all stated in the Bhagavad Gita. As we change our dress, similarly, we change our body, and this way transmigration is going on. So, this human life should be engaged in such knowledge and cultivation of knowledge that after leaving this body, we are not going to accept another material body, but we be transferred directly to the spiritual world, and we are situated in one of the spiritual planets as I desire. There are many millions of spiritual planets also. So far we are concerned, we are concentrating our mind to be transferred to the spiritual world, and the highest, topmost planet there, Krishna Loka, Goloka. Chintamani prakara sadamasu kalpa vikkalakhabritesu suravi ravipalayantam Lakshmi sahasra sata samnava sevumanam govindamadi purisam tamam bhaja. This is the description of the Goloka Vrindavan planet in the Brahma Samhita. The first description is that planet is made of Chintamani gems. Chintamani gem means if you get by chance imitation Chintamani gem, you can turn iron into gold. That is Chintamani gem. So these things are there. One may believe or not believe, but we believe because we believe in the Shastra. So we have no moderation. So there is a Goloka Vrindavan planet, Krishna Loka and Vaikuntha Loka. There are as there are different grades of lokas,
planets. Here also, in this material world, there is one planet which is called Siddhaloka. Siddhaloka means they are the inhabitants automatically perfect in all yogic practice. Yogic practice means if you become perfect in yogic practice, you can fly in the air without any instrument. Anima, Logima, Prapti, Vashita, Mushita, there are 8 kinds of siddha. You are sitting here, if you want such and such thing from London, you can get immediate. This is called siddhi, prapti. You can become the smaller than the smallest. You can be packed up in a box. We have seen it. And you'll come out. In Moses Circus, Calcutta, in our childhood, we saw this yogic practice. A man was tied up, hands and legs, put into a bag. The bag was sealed up. Again put into a box. The box was locked and sealed. And the man again came out. We have seen the yogic practices such, yes. Prapti, Siddhi, Onima, you can become the smaller. There was a saintly person at Benares, Trilanga Baba. So he was practiced to sit naked in the public road. So government objected that you cannot sit naked here. So he did not speak. So he was arrested and taken to the custody and put into the jail. He again came out. So these are yogic practice. It's a perfection. Anything you like. The most perfect yogi can create even one planet. They become so powerful, but still, that is all material power, that is not spiritual power. The real spiritual power is that you give up this body, you give up this material world, go to the spiritual world, go back to home, back to Godhead. That is your perfection, and that is very easily obtained by this Krishna consciousness attitude. Thank you very much. हरे हरि 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 हरे कृष्ण। तो ये प्रसंग चल रहा है विदुर यमलोक से वो यहाँ पर पधारे थे शुद्ध के परिवार में। तो पापा जी बता रहे हैं कि कन्या लोकों में किस प्रकार से जा सकते हैं या किस प्रकार से नहीं जा सकते। पहले पापा जी बताते हैं किस प्रकार से नहीं जा सकते दूसरे लोकों में, उदाहरण से समझाते हैं। प्रोपल बताए कि जैसे हम कहीं जाना कोई वीजा की जरूरत पड़ता है तो वहाँ जय श्री राधा माधव की जय श्री गौरता की बिना वीजा के हम कहीं में नहीं जा सकते हैं। इसलिए हम भगवान को हमारी इच्छा के अनुसार हम जा नहीं सकते, बाई फोर्स हम जा नहीं सकते। तो हम उसके लिए नॉलेज ऑफ कल्टीवेशन करना पड़ेगा, उसका जो प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू। भगवत गीता इस विषय में क्या कहती है कि कैसे अलग अलग लोकों में जाया जाता है? भगवत गीता का श्लोक है, इनको दे देते हैं।
तो जी भगवद गीता में यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता, आगे भूतानि यान्ति भूतेज्य मध्यान्तिनो मतलब कि जो देवताओं की पूजा करेंगे वो देवताओं के लोक को जाएंगे, पितरों की पूजा करके पितरों के लोक को जाएंगे, भूतों की पूजा करके भूतों के लोक को, और जो भगवान की पूजा करेंगे वो भगवान मेरे पास आएंगे। यस। और फिर इसमें एक और श्लोक आता है भगवद गीता में जहाँ बताया जाता है कैसे ऊपर के और कैसे नीचे के लोकों में जाया जाता है। मुझे भगवद गीता के 14 पॉइंट आई थिंक 8th वर्ष में बता रहे हैं कि 14.18 हाँ, उसमें बता रहे हैं उद्वं गच्छन्ति सत्वस्थ मध्व तिष्ठामि राजस और जगन्न गुणवृत्तिस्थ अधोगच्छन्ति तामस। कि हम सत्वगुण का पालन करेंगे तो हम हायर प्लैनेट्स में जाएंगे, अगर हम रजोगुण का पालन करेंगे तो हम मतलब ये भूलोक में रहेंगे, और अगर हम तमोगुण का पालन करेंगे तो नीचे लोकों में जाएंगे। और नीचे लोकों में भी जा सकते हैं और लोअर स्पीशीज में भी जा सकते हैं, एनिमल स्पीशीज में। फिर प्रभुपाद जी बता रहे थे कि ये लॉजिक से कैसे समझ सकते हैं कि हमें अगला शरीर धारण करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कह रहे थे कि ये लाइफ ये नहीं है कि इतने यही शरीर एकमात्र शरीर है, इसके बाद नेक्स्ट बॉडी भी हमें मिलता है। तो ये लॉजिक से समझा रहे थे प्रभुपाद जी, भगवद गीता का एक श्लोक लेके उसमें से लॉजिक से जी वो देहनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि हमारा बॉडी ऐसे नहीं रहेगा क्योंकि बचपना भी था, खेल भी रहते हैं एज ए चाइल्ड, वो बॉडी है नहीं। तो इस तरीके से बहुत चेंज आ गया ना। जैसे प्रभुपाद जी समझाते कोई आपको बचपन में देखा हो और फिर 5 साल बाद देखे और फिर उसको पहचान भी नहीं पाएगा। Years he become like not like a growing son. Then बोलते हैं कि mother, he is small in the lap of the mother. Mother will say, "Oh, she is the same person." But he will say, "Oh, you have so grown so much, not able to recognize only." So body has changed in one sense. So similarly, after giving up this body, the complete body will be changed. ये logic से समझा। तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि बेसिकली जो साइंस है, जो कॉलेजेस हैं, दे आर क्लेमिंग देमसेल्फ एडवांस इन नॉलेज, बट दे आर मिसिंग वन पॉइंट which is actually advancement of knowledge. So what is the point missed by these colleges and universities? Prabhupada कह रहे हैं कि they are missing the science, the transmigration of soul. हाँ, सोल के बारे में ही नहीं जानते, ट्रांसमाइग्रेशन के। तो ये जो साइंस है ये हमारे आचार्यों ने इसी पॉइंट को समझाया है। कैसे ये जो इसी चीज को एडवांस नॉलेज की तरफ से समझाया है, कौन से आचार्य ने समझाया है? प्रभुपाद जी सनातन गोस्वामी का एग्जाम्पल दे रहे थे। जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं तो कहते हैं कि मतलब लोग तो मुझे कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं वास्तव में कौन हूँ। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक्चुअली ये सही है, राइट नॉलेज है, ये एडवांसमेंट है। यस, दैट इज द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। और प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड सबमिशन या व्हाट इज द वे टू अप्रोच अ स्पिरिचुअल मास्टर। प्रभुपाद बोलते हैं कि आई एम लाइक आई डूइंग सो मच हॉस्पिटल थिंग्स, आई एम डूइंग लॉजिकल थिंग्स, now I want to surrender again knowledge, just like Arjuna and the example given by Prabhupada. Yes, thank you. Surrender is the way, या submission is the way। उसमें प्रभुपाद यही बोलते हैं जैसे बोलने का, I know so many rubbish things which are useless, now kindly teach me। This is called submission। अर्जुन का एग्जाम्पल। ठीक, थैंक यू।
नेक्स्ट तो पापा जी ये बता रहे हैं इसमें जो यमराज जी का स्टोरी आता है कि हाउ ही वाज बीइंग कर्स्ड। तो इस तरह से पापा जी बता रहे थे कि अलग अलग तरीके से हमें नेक्स्ट बॉडी कारण बन सकता है, अलग अलग कारणों से नेक्स्ट बॉडी या डिग्रेडेशन भी हो सकता है। तो उसमें अलग अलग कारण क्या थे? एक तो यमराज जी का स्टोरी लिया था, तो यमराज जी के केस में कैसे उनको शूद्र का बॉडी मिला। हाँ, एक मुझे भरत महाराज का बता रहे थे कि हाँ, पहले यमराज जी का बताइए, यमराज जी के केस में क्या कर्स के थ्रू कर्ज मिला, बृहस्पति ने कर्ज दिया था। नहीं, बृहस्पति ने हाँ, वो sorry। मुंडक ऋषि थे, उन्होंने सेंटली पर्सन बोलते हैं प्रभुपाद यहाँ पे। और फिर यस एक और एग्जाम्पल था जो कि कर्स का था, वो कौन सा था? वो इंद्र देव को दिया था। बृहस्पति ने। हाँ, और एक और कारण बताते हैं पतन का जो आप पहले बोले थे। जो भरत महाराज का हाँ, कि उन्होंने डियर के प्रति अफेक्शन दिखाया तो उनका एक्सीडेंट, प्रभुपाद जी बोलते हैं एक्सीडेंट से गिर गए वो, हालांकि वो इतने उन्नत थे लेकिन एक्सीडेंटली गिर गए। तो अलग अलग कारण से पतन हो सकता है इस भौतिक जगत में। तो इसमें फिर प्रभुपाद जी एक चीज समझाते हैं कि सेंटिमेंट और प्रैक्टिकलिटी में एक अंतर है कि सेंटिमेंट अच्छा है लेकिन इट विल नॉट वर्क, सेंटिमेंट डजंट वर्क, प्रैक्टिकल चीज होनी चाहिए। ये कैसे समझाते हैं? जिसमें प्रभुपाद जी कह रहे थे कि मतलब सेंटिमेंट से नहीं चलेगा, तो प्रैक्टिकल थिंग्स में प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। वी शुड बी सीरियस, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। इसमें एग्जाम्पल क्या लेते हैं बाबा जी, किस एग्जाम्पल से प्रिंसिपल ड्रॉ करते हैं? एक वो सेनेट की मीटिंग थी 1974 30 अप्रैल, तो उसमें वो हिपीज बन रहे, तो वो शांति के लिए प्रार्थना करने वाले थे। तो बात करें ऐसे प्रार्थना करने से नहीं होगा, यूर ओपनिंग स्लॉटर हाउसेस बट स्टिल गोइंग ऑन कमिटिंग सिंस, एंड सिर्फ प्रेयर से या पनिशमेंट से नहीं बच सकते। तो पापा उसको समझाते हुए कह रहे हैं कि वन मस्ट बी सीरियस, 4 नियम को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। They are opening slaughter houses and they're praying for peace के लिए प्रे कर रहे हैं। Yes. तो भगवत गीता हमें क्या बोलती है कि कैसे हमें नेक्स्ट, कौन सा नेक्स्ट बॉडी मिलता है, कौन से प्रिंसिपल क्या है, कौन सा प्रिंसिपल है, लॉ है? श्लोक बताना पड़ेगा भगवत गीता का 8 चैप्टर, से अगला श्लोक। अंते कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नास्ति अत्र संशय। थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि अगर हम भगवान को जीते जी केयर नहीं करते, उनको रिमेम्बर नहीं करते, तो एवरीवन हैज टू सी गॉड व्हेन एट द टाइम ऑफ डेथ, एंड उस समय एक्सक्यूज नहीं बना सकते। देयर इज नो एक्सक्यूज, प्रॉपर्ली कह रहे। So at the time of death, the mentality which you have created by practice, sada tad bhava bhavita, that will act. So basically उस समय mentality ही check होगी कि हमारी कि जीते जी हमने क्या किया है। So what is the Krishna consciousness movement is doing in this regard? What is the
function of Krishna consciousness movement. How it is elevating. Yes. Prabhupada said that Krishna consciousness gives us how to think of Krishna. Just by thinking, one can promote to the higher planets. Is a Krishna lok. That the Krishna consciousness movement, the giving the chance to think of the Krishna. Yes. Krishna consciousness movement is simply educating people so that at the time of death one can remember Krishna. ये ट्रेनिंग हम दे रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट में. Okay. So how this training is given? How we are teaching Krishna to think of Krishna? So by saying why we should waste our time thinking so many nonsense things? Why not think of Krishna? How beautiful he is standing here with Radharani. This, if we come here and take the impression and simply think of him, our life is perfect. This is Krishna consciousness. सुंदर अर्चा विग्रह का दर्शन दे रहे हैं जब आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए. This is the way we are allowing people, we are making people, educating people to think of Krishna. ओके. बाबा जी बोल रहे हैं कि ह्यूमंस का चाहे जैसा भी हो उसको ट्रेनिंग दिया जा सकता है, कैट्स एंड ऑक्स को नहीं दिया जा सकता. दिस इज द अपॉर्चुनिटी. तो इसमें इसी में जो एग्जाम्पल है कि ह्यूमंस को ट्रेन किया जा सकता है, ये किसके उदाहरण से लेते हैं कि जैसे यमराज जी के यही से लेते हैं कि विदुरा रिटर्न हिज प्लेस आफ्टर. तो उसमें बोलते हैं कृष्णावेशेन तच्चित्तः. कृष्ण के आवेश में अपना चित्त मग्न करके वो चले गए. हालांकि वो शूद्र बॉर्न थे लेकिन फिर भी वो चले गए. तो इससे इट इज पॉसिबल, उसी से लेते हैं. हालांकि वो महाजन है, शूद्र के शरीर में भी है. और प्रभुपाद जी वहां से प्रिंसिपल लेते हैं कि कैसे भी ह्यूमन बीइंग को कृष्ण का आवेश लेकर या कृष्ण का चिंतन कराकर भगवत धाम भेजा जा सकता है. तो रियल योगा और ब्लफ योगा में क्या अंतर है? व्हाट इज रियल योगा? You want to answer? प्रभु जी, रियल जो योगा है उसमें डिसाइड मतलब जो ब्लफ योगा है उसमें डिसाइड नहीं होगा कि डेथ जो है वो कभी भी आ सकती है ना. पर जो रियल योगा है उसमें डिसाइडेड होके डेथ हम कर सकते हैं, नेचुरल डेथ. इसमें लिखते हैं रियल योगी या रियल योगा प्रैक्टिस मीन्स वन बिकम सो परफेक्ट दैट ही विल नॉट डाई नेचुरल डेथ. नेचुरल डेथ नहीं आएगी उसका, वो खुद डिसाइड कर सकता है. उसमें प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कुंभ मेला. कुंभ मेला में योगी आते हैं बड़े जवान 300 साल 400 साल लाइफ वाले, और ये वो अभी तक इसलिए वो उधर है कि वो अभी उन्हें लग रहा है कि अभी हमारा प्रैक्टिस पूरा नहीं हुआ है, तो अभी इसलिए वो कंटिन्यू करते रहते हैं अपना प्रैक्टिस. इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक जैसे मेरे को एग्जाम देना है तो जब तक मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है तो मैं एग्जाम देने नहीं जाता है. इस तरह से तो एक कंसेशन दिया जाता है योगिक प्रैक्टिस में. ये कंसेशन है कि जब तक आपका प्रैक्टिस नहीं हुआ है तब तक आप अपना प्रैक्टिस करते रह सकते हो, आपकी लाइफ लंबी हो जाएगी. ये कंसेशन, इसको नेचुरल डेथ नहीं आएगा. उन्हें 100 साल बाद मरना पड़ेगा उसको, वो 200-300 साल कैसे जी रहा है, ये कंसेशन दिया गया उसको. ये ईशोपनिषद में भी आता है कुर्वन् एव हि कर्माणि जिजि विशेषता समः एवं त्वयि नान्यते तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे. कि जो इस तरह से जीता है वो लंबा जीवन जी सकता है, उसको कर्म बंधन नहीं लगता है. तो बाबा जी इसमें बताते हैं कि योगा प्रैक्टिस और फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस में क्या अंतर है.
योगा से कोई योगा ये जो प्रैक्टिस करके भी अन्य लोकों में या भगवान के वैकुंठ लोक में जा सकता है, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी जा सकता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस आता है? प्रभुपाद जी, जब हम कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस में जाते हैं तो कभी हम जन्म मृत्यु जो है जन्मावधि वो हम दोबारा नहीं मिलता है हमको। और भी वो वैकुंठ लोक में जाएगा तो भी वापस नहीं आएगा। अगर वैकुंठ लोक में चूज करता है योगी जाने को, तब भी वही वो प्रिंसिपल तो वो उधर भी अप्लाई होता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि उसमें सक्सेसफुल ज्यादा लोग नहीं होते। हाँ, यस, सक्सेस रेट बहुत कम है, पासिंग रेट बहुत कम है। और इसमें जनरली प्रभुपाद कहते हैं इट इज नॉट सक्सेसफुल, बट द कृष्णा कॉन्शियस भक्ति योगा सिस्टम इज सो इजी एंड परफेक्ट that if you simply think of Krishna and if you become perfect and to think of Krishna at the time of death, that immediately you are transferred to Krishna Loka. तो बहुत इजी है, सिंपल है और सक्सेस रेट ज्यादा है। ओके, तो हमारे लिए एक और चीज समझाते हैं कि जैसे अगर किसी और प्लैनेट में चले जाते हैं तो और कृष्ण लोक में जाना और किसी और स्वर्ग लोक में जाना, उसमें क्या डिफरेंस आता है? कोई स्वर्ग लोक को टारगेट मान ले, वहां चला जाए, इजी है, इजी है। जैसे प्रॉपर बोलते हैं, यू गो टू मून प्लैनेट, यू लिव बिफोर 10,000 years, बट आफ्टर दैट टू कमिंग बैक टू द वापस आना पड़ेगा। और एक प्रॉब्लम है, और क्या प्रॉब्लम है मटेरियल प्लैनेट में जाने की? Because we following the process of जन्म मृत्यु जरा। यस, 4 प्रॉब्लम्स हमेशा आएगी, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी। लेकिन गोलोक वृंदावन में जाएंगे तो नहीं आएगी। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट स्पेशल है क्योंकि हम वैकुंठ लोकों में से भी सबसे हाईएस्ट प्लेनेट पे टारगेट लेके चले। बट ही गोज टू द हाईएस्ट प्लेनेट ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, गोलोक वृंदावन, वेयर कृष्णा इज देयर। ओके, प्रभुपाद जी कह रहे थे कोई माने या ना माने, कोई वन में बिलीव और नॉट बिलीव, तो हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि ऐसे वैकुंठ जगत है, कृष्ण लोक है, तो किस आधार पे, क्यों माने हम? शास्त्र के आधार पर। हाँ, शास्त्र के आधार पर मानना पड़ेगा हमें। ओके, ओके, लास्ट में प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि आप कितने भी बड़े योगी बन जाएं, चाहे सिद्ध लोक में भी चले जाएं, तो फिर भी वो मटेरियल पावर रहती है और स्पिरिचुअल पावर अलग होती है। तो ऐसा क्या प्रभुपाद जी ने समझाया इस प्रिंसिपल में? मतलब स्पिरिचुअल पावर मटेरियल पावर में क्या अंतर है? प्रभुपाद के रियल पावर इज स्पिरिचुअल पावर एंड दैट इज to give up this material body and go back to spiritual world, back to Godhead. Yes. And this Krishna Pai movement is teaching us so easily. तो जैसे प्रभुपाद बता रहे थे कि सिद्ध लोक में बहुत सिद्ध होते हैं, योगी होते हैं, वो बहुत अष्ट सिद्धि होती है, अनिमाल अधिमा प्राप्ति, बहुत बड़े बड़े काम कर लेते हैं। प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, एक व्यक्ति को जेल में डाल दिया, वो जेल से भी निकल के आ गया, एक को बॉक्स में डाल दिया, पर वो सारा क्या है, मटेरियल वर्ल्ड के अंदर ही है, वो जन्म मृत्यु को चक्कर को नहीं पार कर पाएगा, तो वो मटेरियल पावर ही है। इससे बाहर निकलना, जो स्पिरिचुअल प्लैनेट में जा सकता है, वो स्पिरिचुअल पावर है, वो रियल पावर। ये प्रॉपर नहीं, और वो पॉसिबल कैसे है? ओनली बाय कृष्णा कॉन्शियसनेस। शिव प्रभुपाद की जय। जय प्रभुपादा 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 श्रीला प्रभुपादा प्रभुपादा प्रभुपादा
प्रभुपाद श्रीला जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रीला प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथ श्रीमद्